अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। और गाइस ये वेलकम किस तरह हो रहा है, पूरी बारिश में। और अब्दुल हादी ने अम्ब्रेला पकड़ी हुई है और हमें सर्दी फुल लग गई है। और हम जा कहाँ रहे हैं? हम जा रहे हैं अपने वीकली दर्स पर। और आज अब्दुल हादी नात पढ़ेंगे, अली इंशाल्लाह तिलावत करेंगे। और मौसम आप देखें, रात का टाइम है, फुल तेज़ बारिश हो रही है, फुल तेज़। रात को नज़र नहीं आ रही सही तरह। ये ट्री भी हादी हो गया क्योंकि ऑटो आ रहा है। और अली और हादी बारिश का मौसम फुल एंजॉय कर रहे हैं और मुझे अम्ब्रेला दे रहे हैं। तो गाइस फिर पापा जान भी आ रहे हैं, बस जल्दी से चलते हैं। अम्ब्रेला के बगैर तो मैं पूरा भीग जाऊंगा। गाड़ी में बैठते हैं तो अब मस्जिद जाके मिलते हैं। الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Stay in your row by standing. After prayer. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. ما شاء الله سبحان الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. अमीर हरम न फकीर अजम तू अमीर हरम न फकीर अजम तेरे गुण और ये लब में तलब ही तलब तेरे गुण और ये लब में तलब ही तलब तू आता ही आता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा इल्हाम है जामा तेरा कुरान इमामा है तेरा इल्हाम है जामा तेरा कुरान इमामा है तेरा मिंबर तेरा अर्शे बरी मिंबर तेरा अर्शे बरी या रहमतुल लिल आलमीन तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ मेरा घर खाक पर और तेरी रह गुजर मेरा घर खाक पर और तेरी रह गुजर सूरत सिदरतुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा. Subhanallah, mashallah. Once entered Sayyidina Mis'ar bin Qidam rahmatullahi ta'ala alayhi says, I entered the masjid of Sayyidina Imam Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhi, and I saw that after offering the Fajr prayer, he rahmatullahi alayhi would teach people the knowledge of Islam. He would educate the people about the religion. And he would do that all day long until he reached the prayer Salatul Isha. After Isha, he went home, and after I figured he wouldn't be coming back, but a short while after,
He returned with different clothing, with new perfume, with new itar on his clothing, and went into a corner of the masjid and started worshipping again. So I said maybe he will worship a little bit now because he's been here all day teaching those who wanted to learn. But now that he's back, maybe he'll be here for a short period of time, and then I will leave when he leaves. So I could discuss with him, talk with him. But he rahmatullahi ta'ala alayhi says that I stayed there until the time of dawn came about. Sayyidina Imam Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhi continued to worship throughout the night. Ke sari raat ibadat karte rahe. And then I figured, now it's the dawn, he's probably going to go home, change and come back. That's exactly what happened. He rahmatullahi ta'ala alayhi went home, changed his clothes again, put on new cologne, new itar, fresh wuzu made, and then he came and performed Salatul Fajr in congregation, just like the day before. And then he continued to teach throughout the day. The entire day he was teaching. I was shocked as to who this individual is, and how can he be awake and worshipping Allah Ta'ala so much. So the next day he stayed with Sayyidina Imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhi in the background to see when is he going to get some rest. And Sayyidina Mis'ar bin Qidam rahmatullahi ta'ala alayhi says, the only time I saw him take a rest or take a nap was just before Zuhr. After Fajr, he would teach his students, take some time, and then he would rest a little bit, and then get up again and worship throughout the day. Meaning he would educate the students who would come, and then, a public worship, and then the rest of the night he would worship alone. And that's the entire schedule of Sayyidina Imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala. रात जब आए तो अपने आप से इस तरह गुफ्तगू की कि ये आखिरी रात है, शायद दिन ना मिले, सारी रात इबादत में करो. लेकिन जब दिन आया तो फिर दिन के टाइम पे भी यही खुद से कहा कि आज रात शायद नसीब ना हो सके तो आज का दिन भी इबादत में गुजार दो. We understand how our pious predecessor would spend the days and the nights in the remembrance of Allah Ta'ala. Alhamdulillah, in the environment of Dawat Islami's weekly ijtima, we recite some Darood Pak regularly, and we will do so now. But before we recite them, we'll hear their blessings. It is stated by the saints of Islam, they've quoted that whoever recites this Darood Pak every Thursday night, inshallah Azza wa Jal, the blessing of this will be that he will have the vision of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam at the time of death, to the extent that he will see the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam lowering him in the grave with his own blessed and merciful hands. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. It is narrated by Sayyidina Anas radiallahu ta'ala anhu that the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever recites this salutation upon me while standing, then prior to him sitting down, or if he's sitting, then prior to him standing up, his sins will be forgiven. Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sallim. It is stated in Qawlul Badi that whoever recites this salutation of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, 70 doors, 70 portals of mercies are open for him. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. One day, an individual came to the blessed court of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the noble and final Prophet sallallahu alaihi wasallam made him sit between himself and Sayyidina Siddiq Akbar radiallahu ta'ala anhu. The Sahaba Karam, the companion Ali Ridwan, was surprised as to who this honored person was. How did he get this rank that he gets to sit next to the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam? When that individual left, the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when he sends salutation upon me, he does so with these words:
Allahumma salli ala Muhammadin kama tuhibbu wa tarda lahu. Almighty Allah Azza wa Jalla's final Prophet sallallahu alayhi wasallam has stated, the one who recites this salat upon me, my intercession becomes wajib for him. Allahumma salli ala Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yawm al-qiyamah. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. गाइज हम आ चुके हैं बाहर। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा जो हमारा वीकली दर्स कुरान का था। और आज मेरे साथ आप देख रहे हैं ये कौन है? ये है मेरे न्यू फ्रेंड। व्हाट्स योर नेम? अब्दुल गनी। ही इज़ आल्सो यूट्यूबर। तो इस व्लॉग को हम यहीं से करते हैं और एंड अब्दुल गनी के साथ हम कराते हैं अली अब्दुल हादी के साथ। जी अब्दुल गनी और अली अब्दुल हादी आप लोग व्लॉग एंड करें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्यार से कर देंगे। इंशाल्लाह अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।